that we have of ourselves, how exactly does this self image form and change over time. So this image develop in a number of ways, but is particularly influenced by our interaction with important people in our life. So self concept जो है आपका, वो generally आपकी thought होती हैं of as our individual perception of our behavior, abilities and unique characteristics. ये एक mental picture होती है self concept जो है कि आप as a person कैसे हैं. For example, beliefs such as I am a good friend, or I am a kind person, or एक आपकी part of an overall self concept. सेल्फ कॉन्सेप्ट या जो सेल्फ होती है बेसिकली वो यही होती है कि आप ये सोचते हैं कि हु इज हु वी थिंक वी आर, हम कौन है, द पिक्चर वी हैव ऑफ आवर सेल्फ प्लस द पिक्चर वी थिंक अदर हैव ऑफ अस. ये एक रिलेट करता है कंसेप्ट लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी, C.H. कूले की है सोशियोलॉजी के अंदर, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कंसेप्ट है आई एंड मी का, उसके साथ ये रिलेट करती है. सेल्फ कंसेप्ट जो है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ओवरऑल वेलनेस के अंदर. इट अफेक्ट द वेज वी लुक एट आवर बॉडी, हाउ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ एंड इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स, एंड इट इवन इन्फ्लुएंस हाउ वी मेक डिसीजन. सेल्फ मतलब हम लोग खुद को कैसे देखते हैं, हम इसको जज करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे लगते हैं, कैसे नजर आएंगे, या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं. तो ये बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट टेंड टू बी more आप कह लें when people are younger and still going through the process of self discovery and identity formation. तो at this age जो self perception है वो बहुत डिटेल एंड ऑर्गेनाइज होती है. लोग जो है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि हम हैं कौन, हमारे लिए हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो उसके लिए फिर फर्दर इसके अंदर 3 कंसेप्ट आ जाते हैं आपके पास: सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम and ideal self. When we talk about the self-esteem, it also referred to as self-worth or self-image, is a global evaluative dimension of the self. For example, an adolescent might perceive that she is not merely a person but a good person. Of course, not all adolescents have an overall positive image of themselves. Self-esteem basically you can say that how much you can value yourself. A number of factors can impact self-esteem, including how we compare ourselves to others and how others respond to us. When people respond positively to our behavior, we are more likely to develop positive self-esteem. When we compare ourselves to others and find ourselves lacking, it can कह सकते हैं आप have a negative impact on our self-esteem. Adolescents have a varying level of self-esteem, which appears to be influenced such factor like as gender, ethnicity, social class. So satisfaction with physical appearance जो भी adolescents की होती है is a large component of self-esteem. And अगर if we talk about the adolescents girl, they have greater dissatisfaction with physical appearance than do boys. तो इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज अ यंग पीपल. हमें दूसरों को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आप अच्छे नहीं लग रहे या आपके अंदर, क्योंकि हमारी जो फिजिकल है बॉडी है वो या आईज है, नोज है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है. तो उसमें इंसान की अपनी तो कोई वो चॉइसेस ऐड नहीं होती. तो वहाँ पे सेल्फ स्टीम जो है ना वो टीनेजर जब होते हैं बच्चे, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे होती है. Self concept refer to domain specification, evaluation of the self. Adolescents make self evaluation in much domains: academic, athletics, physical appearance, and so on. In some, self esteem refer to the global self evaluation. Self concept to domain specific evaluation. Self concept can also refer to the general idea we have of ourselves, and self esteem can refer to particular measures about component of self concept. इसके बाद आपके पास सेल्फ इमेज आ जाता है. लाइक सेल्फ इमेज बेसिकली हाउ यू सी योर सेल्फ आप कह सकते हैं कि सेल्फ इमेज यही होता है ना कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं. ईच इंडिविजुअल सेल्फ इमेज इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स including our physical characteristics, personality traits, and social role. So self-image does not necessarily coincide with reality. Some people might have an inflated self-image of themselves, while others may perceive या उसको एग्जीग्रेट करें, अपने फ्लॉज को, अपनी वीकनेस को, और उनको नजर आए जो कि दूसरों को नजर नहीं भी आती, और वो इस तरीके से करें. The self is defined variously by different thinkers. Here is some definition.
according to the definition of James 1890, the self concept developed from social comparison. We compare ourselves with significant others and develop an idea of what we are like. हमारी सोसाइटी के अंदर देखें, जब हम डॉल्सन्स की बात, द सेल्फ एंड द कंजेंस congruence. The organism is a total person. This include all our needs such as food, shelter and social interaction, our emotion, फीलिंग, सेंसेशन एक्सेट्रा. सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म की उसने बात की, ऑर्गेनिज्म को वो रिलेट कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिज्म वो ह्यूमन को कह रहा है जिसकी बेसिक जो नीड्स हैं उसको उसने डिस्क्राइब किया है. सेकंड वो बात करते हैं पॉजिटिव रिगार्ड की. अकॉर्डिंग टू हिम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू हिम इज पॉजिटिव रिगार्ड व्हिच मींस एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल. If these needs are adequately met, the individual develop a self which is congruence with the organism. यानी कि आपकी सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, उसकी सर्टन नीड्स है, अगर वो फुलफिल हो रही है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो बन रही है, जिसको वो सेल्फ का नाम देते हैं. The self is considered with the organism is worthy of regard. The two are in harmony. It leads to development of a healthy psychology of person. जब एक इंसान को घर से भी उसकी प्रॉपर सोशलाइजेशन और या बेसिक उसकी नीड सेटिस्फाइड हो रही हैं, वो मेंटली और फिजिकली और इकोनॉमिक सोशियली फिट है, तो फिर वो उसकी जो उसकी साइकोलॉजिकली वो एक हेल्दी पर्सन रहेगा. If the needs जो है these are not met adequately, the self that develop is out of congruence with the organism. So the self believe that organism is not worthy of regard. कि कभी कभी इंसान आपने देखा होगा कुछ फुलफिल नहीं हो रही तो आपको वो इनर कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ रिजेक्शन एंड अलाइनेशन की तरफ ले जाता है. अलाइनेशन डिप्रीवेशन को कहते हैं, यानी कि आप अपनी चीज से महरूम, किसी चीज से महरूम होना. Rogers added another concept to this model called ideal self. As we talk about that, ideal self is related to how you wish you could be. In many cases that we see ourselves and how we would like to see ourselves do not quite match. So ideal self जो आप करते हैं कि आपको ऐसा दिखना है, ऐसा नजर आना है, या आप में ये abilities होनी चाहिए. This is a picture of what kind of person one want to be. It is an aspiration and a dream. If there is a congruence between the self and the ideal self, then there is the development of a balanced and integrated person. If there are out of congruence, if there is a big gap between the two, it may lead to psychological imbalance. अगर आपके self और ideal self के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो इट मीन्स कि आप साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस है, कि आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा बनूं और आप वैसे नहीं है, यानी कि आप खुद ही अपने आप को आइडियलाइज जो है वो नहीं कर पा रहे. इसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द कॉग्निटिव और थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड जनरली रेफर टू द टोटलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एंड डायनामिक सिस्टम ऑफ लर्न्ड बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस that each person hold to be true about his or her personal experience. यही जो हमने बात की कि इसके अंदर basically when people are younger and still going through the process of self discovery and identity formation, तो वहाँ पे ये हम कहते हैं कि वो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो इमर्ज होता है, डेवलप होता है. इसमें लोग जो है वो परसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ऐसा आइडिया जिसमें वो ये देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे बेहतरीन जो है, जो जितना कुछ उन्होंने सीखा होता है उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट कम टू द मैस्लो नीड्स हायरार्की. आप लोग पहले इसको